once again welcome to my YouTube channel. मैं आपका दोस्त अर्पित विश्वकर्मा। आई एम प्रोवाइडिंग ए कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। गाइस, जैसा कि आप चैनल पर देख चुके हैं, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है ये कैनवा का ट्यूटोरियल है। खैर, कैनवा तो जो है काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़फुल होता है, जैसे अपने रिज्यूम वगैरह बिल्ड करना, अपना फेसबुक की स्टोरी वगैरह बनाना, काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। पर हमारा जो आज का वीडियो है ये उस विषय में होने वाला है कि हम अपने सोशल मीडिया ग्राफिक्स को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा की मदद से। गाइस, मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताया था जो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं आपके सोशल मीडिया के ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने में। आज उन्हीं में से हम एक टूल्स के बारे में समझेंगे, क्या ट्यूटोरियल देखेंगे कि कैसे हम अपने सोशल मीडिया ग्राफिक्स को डिज़ाइन करके अपनी पोस्ट और स्टोरी को एक काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। सो गाइस, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गो टू माय डेस्कटॉप। तो फ्रेंड्स, हम लोग कैनवा पर आ गए हैं। तो यहाँ पे कैनवा पर आपको मैं इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करके बताता हूँ। यहाँ पे क्रिएट डिजाइन के बाद यहाँ पर हमने इंस्टाग्राम पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया है। उसमें उसमें इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए ग्राफिक्स को डिजाइन करना है। यहाँ पर काफ़ी डिजाइन मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी आपको टेम्पलेट डिजाइन मिल जाएंगे। यहाँ पे लोगो वगैरह बना सकते हैं, यूट्यूब पे थंबनेल, पोस्टर, पोस्ट, प्रेजेंटेशन, कमेंट, काफ़ी कुछ मिल सकते हैं। ये सब काफ़ी कुछ देखने मिल रहा है। तो लेट्स चले अपने लिए एक बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं अपनी फोटो के लिए। बैकग्राउंड और सिलेक्ट करते हैं, बस स्ट्रेट करते हैं तो हमें जैसे बैकग्राउंड से तो यहाँ पे एलिमेंट जाते हैं तो ये तरह से कवर करने से ब्लर करने लगे। तो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, तो इसको ड्रॉ कर देते हैं और पेन सिलेक्शन में एक कलर मुझे कलर चेंज करना है, दूसरा कलर कर सकते हैं। जैसे मैंने वाला कलर किया इसको थोड़ा सा ब्लर करना है, इसको भी लगी एडिट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे जो 80% को पूरा क्लियर करता हूँ, 60% रखी है। अब मुझे यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है, तो मैं मेरी फोटो क्लिक कर लेता हूँ और इसका बैकग्राउंड आ रहा है और बैकग्राउंड मुझे हटाना है। मैं इफेक्ट को जाता हूँ, बैकग्राउंड रिमूव करके तो बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। लेकिन ऊपर पीछे को बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लगा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड पर रिमूव कर सकते हैं। हमें इसको अपने इमेज के अकॉर्डिंग से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। हमेशा जो फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ उस तरह तक क्लिक करता हूँ। तो ऊपर से सिलेक्ट करके ब्राउज करेंगे, इसको ब्राउज कर लेते हैं। और इसके साथ में कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं।
टाइप करते हैं कलर चूज करना है साइज के अकॉर्डिंग चेंज करके इसको सबमिट करना है कंटिन्यू क्लिक करना है उसको फिर यहाँ पे इसको मैनेज करना है तो आपको डिलीट कर लेता हूँ और सेव करके तीनों में अलग क्लिक करना है यहाँ पे मुझे लोगो मिल जाएगा उसके बाद
यहाँ क्लिक करके ग्रोथ करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन बता देता है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पीएनजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में आपको डाउनलोड कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग की ओवरव्यू। और आप चाहें यहाँ पे स्मॉल वीडियो बना सकते हैं। तो मुझे इसमें जेपीजी में डाउनलोड करना है तो जेपीजी पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोडिंग की है तो गाइस हमारा ये डाउनलोड देखते हैं। यहाँ पे रहता है कि बनने के बाद ये डाउनलोड कैसे दिख रहा है आपको। ये देखो दिस इज द कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ कैनवा, जहाँ हमने देखा कि हम कैसे कैनवा का यूज़ करके अपने सोशल मीडिया के ग्राफिक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और ना सिर्फ डिज़ाइन करना बल्कि हमारे पोस्ट और स्टोरी को काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। गाइस, यदि आपको मेरा वीडियो भी अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऊपर जो आपको नोटिफिकेशन आइकॉन दिख रहा है इसे प्लीज़ दबाना ना भूलें। इससे होगा क्या, आने वाले टाइम में जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट बेसिस पे मिलता रहेगा। सो गाइस, प्लीज़ टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय गाइस, सी यू।